So friends, welcome, namaskar and good day to all. Friends, I am here once again in front of you with one more exciting and informative video related to our profession. So first of all, let me share my screen. We have to log into cevnews.in. When we log into cevnews.in, we have to scroll it down. When you click on cevnews.in, a pop-up window will appear on your screen. If you would like to show the notification for the latest news and update, you need to click on allow button. Then you will regularly receive the notification for the latest news and updates posted on cvnews.in or City and Press website. So let's continue with our today's topic. And here is that in latest news, you have to click on the first topic. And today's topic for today's video is understanding family trusts under the Indian Trust Act 1882. We will discuss about formation, purpose, and relevance in modern estate planning. Friends, we will make two videos in continuation on this topic. The first video will be, the part one will be understanding of the family trust. What are the family trust? What is the mode of formation? What is the purpose and what is the relevance? And in part two, we will discuss about the valuation aspects and valuation methodologies and valuation process. How to value a family trust as a professional valuer. We will discuss this in part two. So here we will discuss only the formation, purpose, and relevance of family trust under the Indian Trust Act 1882 in modern estate planning. So first of all, we will discuss about the introduction. What is family trust? In the realm of property, wealth, and inheritance management, the concept of a family trust has emerged as a key instrument for ensuring orderly succession, asset protection, and tax efficiency. Under the Indian Trust Act 1882, a trust represents a fiduciary relationship where one party holds property for the benefit of another. When such an agreement is created, especially for family members, it is referred to as a family trust or private trust. We refer it as a family trust, or we can refer it as a private trust. With the growing awareness of estate planning and increasing need to manage intergenerational wealth, family trusts have become vital for professionals, entrepreneurs, and high net worth individuals in India. Definition and legal foundation. So, trust as defined under Section 3 of the Indian Trust Act 1882. The definition is given in the Section 3 of Indian Trust Act 1882. The Act defines a trust as an obligation annexed to the ownership of the property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner. This is the official definition as mentioned in Section 3 of Indian Trust Act 1882. Now, see here. In essence, a trust is a legal relationship in which the settlor, also known as author or creator,
transfer the property. Settlor transfers the property. He is the owner, author, or creator of the trust. He transfers the property, settlor transfers the property to the trustee who manages it and for the benefit of one or more beneficiaries. Basically, trust is created for the beneficiaries and it is managed by the trustee and it is created by the settlor. There are three main words in a trust. A family trust therefore continues a private agreement where the beneficiaries are confined to members of the settlor's family. Beneficiaries are confined to members of the settlor's family. That's why it is known as family trust. Now, key components of a family trust. There are 4 key components. One is settlor, second is trustee, third is beneficiaries, and fourth is trust property. That is called corpus. Now, settlor, author of the trust or creator of the trust. The person who establishes the trust and contributes property or assets to it. He is known as the settlor. Now, trustee. Who is known as trustee? Individuals or institutions responsible for managing and administrating the trust property in accordance with the trust deed and in the best interest of the beneficiaries. So, see here, the trustees can be individuals or institution on whom settlor depends or settlor authorized to act as a trustee. Now, beneficiaries, the family members who stand to benefit from the trust. The family members who stand to benefit from the trust. These may include the settlor's spouse, children, parents, or any other relative. So, because we are talking about the family trust. So, in family trust, the beneficiaries are no doubt the family members of the settlor. And कौन-कौन हो सकता है? सेटलर के वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और एनी अदर रिलेटिव. तो सेटलर की मर्जी है वो किसके नाम से किनको बेनिफिशियरी बनाता है और किसको ये बेनिफिट जाना चाहिए. ट्रस्टी वो कोई भी अपॉइंट कर सकता है. ट्रस्टी अपने वाइफ को भी अपॉइंट कर सकता है या थर्ड पर्सन इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकता है जो लुक आफ्टर करेंगे ट्रस्ट के सारे इंटरेस्ट को. ट्रस्ट के सारे जो उसमें मेंशन है क्लॉजेस सब प्रॉपर वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे. दैट इज द बेसिक duty of the trustee to manage the trust, managing and administrating the trust property. Now, trust property, it is also called as corpus. The asset transferred to the trust, which may include land, buildings means residential house, commercial property, or any other building. It may be godowns or factories or any other thing which belong to the family, which may include land, buildings, shares, securities, cash, or other movable or immovable property. Is it clear? The asset transferred to the trust, what are the assets which may transfer to the trust? Which may include land, buildings, shares, securities, cash, or other movable or immovable property. Now, how to form a family trust? Formation of a family trust. We will discuss various important steps involved in this. The creation of a family trust requires careful legal structuring. The trust forms the backbone of the arrangement. The trust deed forms the backbone of this arrangement. So, trust deed is to be created very carefully and which requires careful legal structuring because it forms the backbone of the agreement. Now, what are the steps involved? First of all, drafting the trust deed. The deed should clearly mention the intention to create the trust. Settlor's intention to create a trust. Detail of the settlor
trustees and beneficiaries. It should be clearly mentioned in the deed, details of settlers, trustees and beneficiaries. Now, purpose and duration of the trust. That is very important point. What are the purposes of creating the trust and what is the duration of the trust? कब तक ये ट्रस्ट वैलिड रहेगी, उसका टाइम पीरियड क्या है और कब तक ये रहेगी. It can be for lifetime, it can be for a specific period also. Now, powers, duties and responsibility of trustees. That has to be mentioned in the trust deed. Powers, duties and responsibility of the trustees. What are the responsibility of the trustees? What are the powers? What are the duties of the trustees? Now, provisions regarding distribution of income and assets. That has to be clearly mentioned to avoid future conflicts. Provision regarding distribution of income and assets. Now, step number 2. First is drafting the trust deed. Drafting हमारा पूरा हो गया. Now, next step is execution of the sale, execution of the trust deed. उसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, कहां पर कराएंगे, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ये हम अब सेकंड एंड थर्ड स्टेप में डिस्कस करेंगे. द ट्रस्ट डीड इज executed on appropriate non-judicial stamp paper, the value of which varies according to state laws. The value of the trust stamp papers varies according to the state laws. There are different state laws in different states. So accordingly, उसके हिसाब से ही आपको जो उसके ऊपर revenue जो आपको उसका पेपर की वैल्यू होगी वो उस हिसाब से लेना पड़ेगा. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसकी जो फिक्स हैं, उसके जो ड्यूटीज हैं या उसके जो चार्जेस हैं या उसके जो फीस है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है. उस स्टैम्प पेपर का जो प्रॉपर उसकी वैल्यू है उतने का स्टैम्प पेपर आपको लगाना पड़ेगा. नाउ रजिस्ट्रेशन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर professionals, for valuers like me and you. Registration is mandatory if the trust involve immovable property under section 17 of the Registration Act 1908. It is very important to be understood that if any trust involves any immovable property, then its registration is compulsory, mandatory as per section 17 of the Registration Act 1908. For movable property, registration is optional, but recommended for legal recognition. For movable property, registration is optional. If you are transferring some movable property to the trust, then तब आपको registration mandatory नहीं है as per Registration Act. लेकिन it is always recommended कि legal recognition होगी तभी एक ट्रस्ट की प्रॉपर उसकी वैल्यू होगी और प्रॉपर उसके ऊपर आप आगे उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट इट शुड बी रजिस्टर्ड एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर लीगल रिकॉग्निशन. नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. पॉइंट नंबर 4, स्टेप नंबर 4. द सेटलर मस्ट formally transfer the property or assets to the trustees to complete the creation of the trust. जो भी सेटल की प्रॉपर्टी होगी जो उस ट्रस्ट में इन्वॉल्व करना चाहेगा वो ट्रस्ट में देना चाहेगा, that will formally be transferred or assets to the trustees to complete the creation of the trust. Settler must formally transfer the property or assets to the trustees to complete the creation of the trust. Now, objectives and advantages of creating a family trust. What are the objectives and what are the advantages of creating a family trust? Family trust serves multiple practical and financial purposes. The principal objectives includes succession and estate planning. A trust ensures a smooth and dispute-free transfer of wealth to the next generation. It eliminates the need for probate proceedings and maintains confidentiality in estate distribution. That is very important. कल को अगर हम किसी लीगल डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं या लीगल डिस्प्यूट क्रिएट ना हो या हम प्रोबेट
प्रोसीडिंग्स में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, उससे बचने के लिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक ट्रस्ट बना दिया जाए सक्सेशन और एस्टेट प्लानिंग के लिए। ट्रस्ट एंश्योर द स्मूथ एंड डिस्प्यूट free transfer of wealth to the next generation. Now, asset protection. By transferring assets to a trust, the ownership shifts from an individual to the trust as a separate legal entity. Trust is a separate legal entity from the settlor. It is the separate identity than the settlor. This protects asset from personal liabilities, creditors, and legal claim. So, when a settlor transfers its asset to the trust, then it will be the property of the trust. The assets will be the property of the trust. Ownership shifts from individual to the trust as a separate legal identity. Now, tax planning and efficiency. A trust structure allows for strategic distribution of income among beneficiaries, often leading to reduced overall tax liabilities, especially when beneficiaries fall under low tax brackets. Tax structure allows to a tax structure allows for strategic distribution of income among beneficiaries, often leading to reduced overall tax liabilities, especially when beneficiaries fall under low tax brackets. जो भी आप प्रॉपर्टी वहां पर ट्रांसफर करेंगे, उससे जो इनकम आएगी वो बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर होगी, और अगर बेनिफिशियरीज आर अंडर लो टैक्स ब्रैकेट्स, देन उनको टैक्स लायबिलिटीज भी कम पड़ेंगी. नाउ, सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट्स. A family trust can secure a financial interest of dependents such as minors, aged persons, or family members with disabilities, ensuring long-term care and financial stability. Avoidance of family disputes. A trust deed clearly defines each beneficiary rights, leaving little scope for disagreements or litigation among heirs. A trust deed clearly defines each beneficiary's rights, leaving little scope for disagreement or litigation among heirs. तो इन फ्यूचर कभी भी आपकी फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए ट्रस्ट, अगर फैमिली ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है, उसमें क्लियरली डिफाइंड होगा हर बेनिफिशियरीज के राइट्स. तो उसमें इन फ्यूचर कभी भी कोई डिस्प्यूट होने का कोई चांस नहीं होगा, और डिसएग्रीमेंट या लिटिगेशन इन फ्यूचर सक्सेसर्स जो अननेसेसरीली डिस्प्यूट्स में पड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा आपस में भाइयों में या सक्सेसर्स में या हायर्स में होता है, लीगल हायर्स में, वो हम उस झगड़े को बचा सकते हैं आज ही सारा कुछ डिसाइड करके, क्योंकि उसमें क्लियरली डिफाइंड होता है कि बेनिफिशियरीज के क्या क्या राइट्स होंगे, किस किस को क्या क्या मिलेगा. तो अननेसेसरी जो डिस्प्यूट्स होंगे या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बाद में बच जाएगा, और बाद में लड़ाई झगड़े के चांसेस कम से कम होंगे. देन point number 6 is continuity of management. Trustees can ensure that family business or investment continues to operate efficiently even after the death of incapacity of the settlor. तो इन केस अगर सेटलर के साथ कुछ हादसा होता है और या फिर उनकी इनकैपेसिटी होती है मैनेज करने की, तो ट्रस्टीज उसको लुक आफ्टर करते हैं, और ट्रस्टीज ये इंश्योर करते हैं कि फैमिली बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज टू ऑपरेट efficiently even after the death or incapacity of the settler. Unfortunately, अगर सेटलर के साथ कोई हादसा होता है या उनकी डेथ हो जाती है, तो जो लीगल बेनिफिशरीज हैं ट्रस्ट के अंदर, उनका सारे इंटरेस्ट वॉचवर्ड होंगे, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी या फैमिली बिजनेस या इन्वेस्टमेंट होगी, दे विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एफिशिएंटली बाय द ट्रस्टीज. नाउ we will discuss about the type of family trust. What are the types of family trust? There are 4 types. One is revocable, second is irrevocable, third is discretionary trust, and fourth is specific trust. There are 4 types of family trust you can create. One is, let's discuss one by one.
Point number one, the type number one is revocable trust. The settler retains the power to amend, modify or revoke the trust during their lifetime. रिवोकेबल ट्रस्ट में क्या होता है, सेटल के पास पावर होती है, वो कभी भी उसको अमेंड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है उस ट्रस्ट को अपने लाइफ टाइम के बीच में. इट इज जस्ट लाइक अ विल. जो वसीयत होती है उसके जैसा ही रिवोकेबल ट्रस्ट होता है. सेटलर उसको जब मर्जी चाहे अपनी मर्जी से, उसके पास पावर होती है अमेंड करने की, मॉडिफाई करने की और रिवोक करने की उस ट्रस्ट को. सेकंड इज इररिवोकेबल ट्रस्ट. इररिवोकेबल ट्रस्ट में क्या होता है, वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. अगर ये एक बार ट्रस्ट डीड रजिस्टर हो जाती है, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. इट ऑफर्स हायर एसेट प्रोटेक्शन एंड इज ऑफन यूज फॉर लॉन्ग टर्म एस्टेट प्लानिंग. ये सबसे ज्यादा सेफ रहता है इररिवोकेबल ट्रस्ट एंड इट ऑफर्स हायर एसेट प्रोटेक्शन एंड इज ऑफन यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एसेट प्लानिंग. लॉन्ग टर्म एसेट प्लानिंग के लिए ये हमेशा यूजफुल रहता है और मोस्टली यही यूज होता है इररिवोकेबल ट्रस्ट. डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. The trustees have the discretion to decide how and often beneficiaries will receive benefits from the trust. Discretionary trust में जो सेटलर होता है और ट्रस्ट या ट्रस्टी होते हैं, हैज द डिस्क्रिशन. ट्रस्टीज हैज द डिस्क्रिशन टू डिसाइड हाउ एंड व्हेन बेनिफिशियरी विल रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रस्ट. कब और कैसे, किस तरीके से जो ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज हैं उनको कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके राइट्स जो होते हैं डिसीजन के, वो उसका डिस्क्रिशन ट्रस्टीज के पास होता है. ट्रस्टीज हैज द डिस्क्रिशन टू डिसाइड. नेक्स्ट, स्पेसिफिक ट्रस्ट. द बेनिफिशियरीज एंड respective shares are explicitly defined in the trust deed. इसमें स्पेसिफिकली ट्रस्ट डीड में लिखा होता है स्पेसिफिकली कि किस पर्पस के लिए है और किस लिए बनाई गई. Now, regulatory and tax framework. What are the regulations that apply as per Indian acts? We will discuss here regulatory and tax framework. Indian Trust Act 1882. It governs the creation and administration of private trusts. Registration Act 1908 governs the registration of trust deed involving immovable property. We have already discussed that if the trust in trust, if there is any immovable property, then it is mandatory to register it with under the Registration Act 1908. Then Income Tax Act 1961, Section 160 to 166, and amended accordingly. Regulations. We are discussing about the regulatory and tax framework. Income Tax Act 1961, Section 160 to 166, or amended accordingly. It regulates taxation of trusts. The tax liability may arise either in the hands of the trustee as a representative assessee or in the hands of beneficiaries depending on the nature of the trust. So tax liability dependent on the nature of the trust. किस तरह की ट्रस्ट है और किस लिए बनाई गई है, तो या तो वो ट्रस्टीज के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट, और इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियरी होगी, दैट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट. नाउ वी विल टेक अ illustrative example. Suppose let's consider Mr. H. Desai, a professional engineer, creates a Desai family trust to manage his real estate and investments. Mr. Desai has created a Mr. Desai is a professional engineer like me and you. He's an engineer and he has created a trust in the name of a Desai family trust to manage his real estate and investments. The trustee appoints his spouse and two senior professionals as trustees with his children as beneficiaries. जो ट्रस्ट डीड उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने अपने वाइफ को और दो सीनियर प्रोफेशनल्स, कोई भी सीनियर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, मे बी आई रिकमेंड कि अगर आप ट्रस्टीज बना रहे हैं तो उनमें से एक एडवोकेट हो, एक डॉक्टर हो, तो
ज्यादा बेटर रहेगा, लीगली साउंड रहेगा अगर उनमें से एक सीए हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो और एक डॉक्टर हो जो कि हेल्थ के बारे में जानकारी रखते हो, मेडिकल प्रोफेशनल हो, तो थोड़ा उसमें, या फिर कोई एडवोकेट हो, एडवोकेट इज आल्सो सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल, तो वो उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। ट्रस्ट डीड, द ट्रस्ट डीड मिस्टर देसाई ने जो अपॉइंट किया है उसमें एक अपने वाइफ को अपॉइंट किया, दो सीनियर प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया। सीनियर प्रोफेशनल जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकते हैं, और प्रेफरेबली एडवोकेट या लीगल प्रोफेशनल से, लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। एंड विद हिज चिल्ड्रन एज बेनिफिशरीज, और अपने चिल्ड्रन को, उन बच्चों को उन्होंने बेनिफिशरीज बनाया कि जो भी ट्रस्ट से इनकम होगी वो मेरे बच्चों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होगी। द इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिविडेंड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली टू द बेनिफिशरीज। नाउ सी, द इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी, जो मिस्टर देसाई की कोई भी प्रॉपर्टी जो उन्होंने ट्रस्ट को दिया है या जिसके साथ उन्होंने ट्रस्ट को फॉर्म किया है, उनसे कोई भी रेंटल इनकम होगी उन उस प्रॉपर्टी से, या उनके जो इन्वेस्टमेंट है उससे डिविडेंड होगा, या इट में वी मे आल्सो से लाइक दिस के उससे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उनके कोई एफडीज हैं या कोई उससे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, या उन्होंने कोई पैसा कहीं पर दिया हुआ है उससे कोई ब्याज आ रहा है, या उनका जो शेयर्स हैं उनसे डिविडेंड आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड से कोई बेनिफिट आ रहा है, या कोई वट एवर इट इज, कोई भी जो भी इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ भी आ रहा है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली टू द बेनिफिशरीज। वो एनुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि वो एनुअली होगा। वो चाहे तो मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, या कोई और मोड भी कर सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। The trust structure ensures continuous financial support to the family and avoid future ownership disputes. अब उन्होंने जो ट्रस्ट यहां पर फॉर्म कर दिया उसके क्या बेनिफिट होगा? इट एंश्योर्स कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। जो एक फादर ने सोचा कि मेरे बच्चों को रेगुलर एक इनकम आती रहे, मेरे सामने भी, और मेरे अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे कुछ हो गया तो उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो एक तो उनका वो पर्पस सॉल्व हो गया। सेकंड पर्पस क्या सॉल्व हुआ? इट विल अवॉइड द फ्यूचर ओनरशिप डिस्प्यूट्स। तो फ्यूचर में कभी भी कोई आपस में ओनरशिप डिस्प्यूट्स होंगे तो वो भी उन्होंने उसके ट्रस्ट डीड के थ्रू उसको अवॉइड कर दिया। नाउ इन शॉर्ट, a family trust is an efficient legal and financial instrument that promotes intergenerational wealth preservation, succession clarity, and tax efficient asset management. It is very important. A family trust is an efficient legal and financial instrument that promotes intergenerational wealth preservation, succession clarity, and tax efficient asset management. Under the framework of Indian Trust Act 1882, it provides flexibility and security of families seeking structured estate planning. The valuers, now the point related to our profession. आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि यार हम ये ट्रस्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, किस लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको कोई भी ट्रस्ट है उसका ईयरली वैल्यूएशन, काफी ट्रस्टीज हैं, काफी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उनका जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम इसका एक सीरियल नंबर 2 पार्ट 2 इस वीडियो का रिलीज करेंगे इन कमिंग डेज। उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि फैमिली ट्रस्ट को कैसे वैल्यू किया जाता है। As of now, we will understand for valuers, legal professionals, and financial advisors. A clear understanding of trust formation and valuation is essential. A family trust increasingly become part of modern financial strategy. Professionals must be well versed with their legal implications, documentation, standards, and valuation methodologies. That is very important for valuers. Now, references. The Indian Trust Act, what are the references taken in this presentation? Indian Trust Act 1882, Indian Registration Act 1908, the Income Tax Act 1961,
it can be amended accordingly. Various sections or some sections of these acts may be amended accordingly. And the articles and other special faculties concerned and from the Council of Engineers and Valuers, professional guidance and asset valuation in estate planning, CEV. The one article is published in 2024. We have taken the reference of that article, and we have discussed various things about our this thing from our legal advisor also. Now, about the Council of Engineers and Valuers, CEV, the Council of Engineers and Valuers is a premier professional body representing registered valuers, engineers, and technical experts across India. It actively contributes to standards setting, professional training, and the dissemination of knowledge in valuation, land administration, and fiduciary asset management. So friends, this is all from our side. Thank you very much for watching this video. We will soon will be with you with a new and more understandable video, the part 2 of this family trust, how to value the family trust as a valuer, as a professional valuer. We will soon release the video number 2, that is a part 2 of family trust, how to value the family trust. Thank you very much. Please do not forget to like, share, and comment our official YouTube channel, that is Registered Valuers Club.